एंड प्रोसीजर एक्ट की जो अदालती कार्रवाई होगी बराह रास्त नशर की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 11:30 बजे तक ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये तमाम तर अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। और इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आमद पर उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था उनको, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिल जमी से अदा करने की हिदायत भी की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट आमद पर अमले ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमले से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि आज उनकी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, आप सबका ताउन चाहिए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाया था। इस खबर से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़े खबर दे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद अहमद, शेख शाकिर और मुलाजमीन की हिरासत के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख आमिर शफीक ने दायर की है और दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पुलिस एहलकार शेख रशीद अहमद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट गिरफ्तार करके ले गए हैं। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी शेख रशीद के साथ गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। दरखास्त में सदा की गई है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि ज़ेरे हिरासत अफराद को अदालत में पेश किया जाए। एक मरतबा फिर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समात की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर इत्तफाक कर लिया गया है और ज़राए का कहना है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करना शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए वहाँ पर कैमरा नस्ब किए जा रहे हैं, तारें बिछाई जा रही हैं, DSNG वैन्स भी बाहर मौजूद हैं जो आप अपने मनाजिर में देख सकते हैं। टेलीविजन में 2 DSNG वैन PTV की वहां पर मौजूद हैं और जो ही ये तमाम तर सेटअप पूरा किया जाएगा उसके बाद ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान टेलीविजन को फुल कोर्ट की बराह रास्त नशरियात की हिदायत जारी की गई थी, जिस पर पाकिस्तान टेलीविजन की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा करके जायजा लिया था। याद रहे कि गुज़श्ता रोज ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होने का ओहदे का हलफ उठाया और हलफ लेने के बाद पहला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समात के लिए मुकर्रर किया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रवां बरस अप्रैल में किसी भी आईनी मुकदमे के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समात अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर इत्तफाक कर लिया गया है और अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 में कैमरे नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। 5 कैमरे कमरा अदालत नंबर 1 में नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि 4 कैमरे विजिटर गैलरी में लगाए गए हैं और 1 कैमरा जजेस डाइस के सामने वकला के रोस्ट्रम के लिए नस्ब किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। एक साइड पर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं जब जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बगैर प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अपनी ज़ाती गाड़ी में अदालत आए जहां अमले ने उनका इस्तकबाल किया था और इस मौके पर अमले से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि आज उनकी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, आप लोगों से तफसीली मिलेंगे, आप सबका ताउन चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए अदालत आते हैं, लिहाजा आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, आने वाले लोगों की मदद करें। ये वो मनाजिर थे जब जस्टिस काजी फाइज ईसा आज पहले दिन चीफ जस्टिस बनने के बाद पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं PTV का वो अमला जो 5 कैमरे लेकर कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचा, वहां पर 5 कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में पहले दिन फुल कोर्ट मीटिंग 4 निकाती एजेंडे पर गौर कर रही है, जिसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात और तरजीही बुनियादों पर समात के लिए मुकदमात का इंतखाब एजेंडे में शामिल है। अवामी
مفاد کے مقدمات کی کارروائی ٹیلی کاسٹ کرنے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اور مقدمات کی مؤثر سماعت کے لیے رہنما اصول مرتب کرنے پر مشاورت ایجنڈے کا حصہ ہے. اور یہ میٹنگ میں اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ فل کورٹ سماعت عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. 5 کیمرے نصب کیے جائیں گے. 5 کیمرے کمرہ عدالت نمبر 1 میں نصب کیے جائیں گے جبکہ 4 کیمرے وزٹر گیلری میں لگائے گئے ہیں اور 1 کیمرہ ججز ڈائس کے سامنے وکلا کے روسٹرم کے لیے نصب کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فل کورٹ سماعت عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اور آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ کل یعنی کہ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا تھا. 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. اس دوران ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں اور صدر مملکت نے ان سے حلف لیا تھا. آپ کو یہ اس وقت آج جو عدالتی کارروائی ہے جو اہم امپورٹنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فل کورٹ سماعت, جس کے لیے عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے پر فل کورٹ میٹنگ میں اتفاق کر لیا گیا ہے. اور فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے 4 نکاتی ایجنڈے پر آج غور کیا گیا تھا, جس میں زیر التوا مقدمات اور ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقدمات کا انتخاب ایجنڈے میں شامل تھا. عوامی مفاد کے مقدمات کی کارروائی ٹیلی کاسٹ کرنے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل تھا. مقدمات کی مؤثر سماعت کے لیے رہنما اصول مرتب کرنے پر مشاورت ایجنڈے کا حصہ تھی. اور فل کورٹ میٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت سے قبل ہوئی, جس کے بعد یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کے لیے سپریم کورٹ کہ کورٹ روم نمبر 1 میں کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں. 5 کیمرے کمرہ عدالت نمبر 1 میں نصب کیے گئے ہیں, جن میں سے 4 وزٹرز گیلری میں لگائے گئے ہیں جبکہ 1 کیمرہ ججز ڈائس کے سامنے وکلا کے روسٹرم کے لیے نصب کیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. اب سے کچھ ہی دیر بعد سماعت ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کریں گے. سپریم کورٹ کے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کرے گا. سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر 13 اپریل کو عمل درآمد روکا تھا اور اب سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فل کورٹ سماعت عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اور ذرائع کے مطابق عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کے لیے کورٹ روم نمبر 1 میں کیمرے نصب کرنا شروع کر دیے گئے ہیں. 5 کیمرے کمرہ عدالت نمبر 1 میں نصب کر دیے گئے ہیں. 4 کیمرے وزٹرز گیلری میں لگائے گئے ہیں جبکہ 1 کیمرہ ججز ڈائس کے سامنے وکلا کے روسٹرم کے لیے نصب کیا گیا ہے. گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا حلف لیا تھا اور آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے عدالتی دن پر فل کورٹ کی سربراہی کریں گے اور باقاعدہ طور پر اب سے کچھ ہی دیر بعد سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا, جس کے لیے کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں. گزشتہ روز پی ٹی وی کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی اور تمام تر جائزہ لیا تھا اور آج یہ کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس سماعت کو براہ راست نشر کیا جائے گا. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے بطور جج کون سے اہم فیصلے دیے تھے, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے دلیرانہ فیصلوں کی وجہ سے نڈر جیورسٹ کے طور پر جانے جاتے تھے. بطور جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میمو گیٹ کمیشن, سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن, آرٹیکل 184(3) کی تجدید, فیض آباد دھرنا کیس سمیت کئی اہم فیصلے دیے, جبکہ انہوں نے 21ویں آئینی ترمیم کیس میں اقلیتی رائے میں فوجی عدالتوں کی بھی مخالفت کی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنانے کے ٹھیک 3 مہینے بعد مئی 2019 میں اثاثوں کی مس ڈیکلیریشن کے الزام میں ان کے خلاف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کیا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت عظمیٰ کے حاضر سروس جج کے ریفرنس کی سماعت کھلی عدالت میں 13 مہینے تک چلتی رہی تھی. ریفرنس کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر 40 سے زیادہ سماعتیں ہوئی تھیں. اس دوران ایک اٹارنی جنرل نے ججز سے متعلق بیان پر نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ بیرسٹر فروغ نسیم بھی کیس میں صدر کی نمائندگی کرنے کے لیے وزیر قانون کے عہدے سے مستعفی ہوئے. ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ میں اپنے دفاع کے لیے خود پیش ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے 19 جون 2020 کو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. فیصلے میں بینچ کے 7 اراکین نے یہ حکم دیا تھا کہ ایف بی آر آئندہ 2 مہینے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پراپرٹی اور ٹیکس معاملے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کارروائی کی جا سکتی ہے. تاہم نظر ثانی کیس میں ایف بی آر کو کارروائی سے روک دیا گیا تھا.
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक खुद नोटिस लिया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें चेयरमैन PTI और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमात सुनने से रोक दिया था। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा को सीनियर जज होने के बावजूद किसी आईनी मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में शामिल नहीं किया गया। याद रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत में गुज़िश्ता रोज़ हलफ उठाया है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस समेत निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और वकला भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ओहदा का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच भी तश्कील दे दिया, यानी कि फुल कोर्ट बेंच। 15 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच आज इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत करेगा और बराह रास्त वो नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत करेगा। और इन जजेस जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं उनके नाम आपको बताते चले। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ कर लिया और आज वो बाकायदा तौर पर अदालती कार्रवाई में इस केस की समाअत करेंगे। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान भी इस बेंच का हिस्सा है। मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी इस बेंच का हिस्सा है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी इस बेंच का हिस्सा है। इस वक्त जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, समाअत के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो समाअत है उसके लिए फुल कोर्ट की मुनाकिद करवाई गई है। जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से इस वक्त जो है वो अमला जो है अदालती अमला वो अदालत में पहुंच चुका है, जबकि जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है PTV का भी अमला यहाँ पर मौजूद है। 4 कैमरे जो है बराह रास्त समाअत नशर करने के लिए 4 कैमरे गैलरी में लगे गए हैं। एक कैमरा जो है वो वकील वाले डाइस के ऊपर लगाया गया है। इसी तरह से आपसे हम लोग फिर पहले भी देख रहे थे कि 9:30 बजे मुतवक्का था कि मगर क्योंकि PTV की जानिब से जो है कैमरे वक्त लगा, तहम अब ये कहते हैं कि यहाँ पर अदालती अमला जो है जजेस का पहुँच चुका है और अब से कुछ देर में जो है वो बकायदा आगाज कर दिया जाएगा। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा जो कैमराज हैं और तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि जो है इसीलिए लगा क्योंकि जो है वो नर्स के दायरे तमाम तर जो बराह रास्त अशरिया के जो इंतजाम कर हैं और जो है वो भी हालत पहुंच गया है और अब से कुछ देर बाद वो जजेस भी अपनी ठीक है, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, कैमरे नस्ब कर लिए गए हैं और अदालती जो अमला है वो भी इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच चुका है। किसी भी वक्त अब समाअत शुरू हो सकती है जो कि बराह रास्त भी आज नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर इतफाक कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर यह समाअत शुरू हो जाएगी और अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 में कैमरे नस्ब करना शुरू कर दिए गए थे और अब तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 5 कैमरे नस्ब किए गए हैं। कमरा अदालत नंबर 1 में 4 कैमरे विजिटर गैलरी में लगाए गए हैं, जबकि 1 कैमरा जजेस डाइस के सामने वकला के रोस्ट्रम के लिए नस्ब किया गया है। और आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था। सुप्रीम कोर्ट समाअत की बराह रास्त नशरियात के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और कैमरों की तनसीब के साथ ऑडियो के बेहतर इंतजामात के लिए टेक्निकल अमला कोशा है। 5 कैमरे अदालत की कार्रवाई को हर जाविये से कवर करेंगे, जबकि कैमरा वीडियो के साथ ऑडियो के इंतजामात बेहतर किए जा रहे हैं। ऑडियो को जजेस और रोस्ट्रम माइक से जोड़ा जाएगा ताकि नशरियात में कोई खलल न पैदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट समाअत की बराह रास्त नशरियात के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरों की तनसीब के साथ ऑडियो के बेहतरीन इंतजामात के लिए टेक्निकल अमला कोशा है। 5
5 कैमरे अदालत की कार्रवाई को हर जाविये से कवर करेंगे। कैमरा वीडियो के साथ ऑडियो के इंतजामात बेहतर किए जा रहे हैं। ऑडियो को जजेस और रोस्ट्रम माइक से जोड़ा जाएगा ताकि नशरियात में कोई खलल न आए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। यकीनन ये एक तारीख साज दिन है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि कोई भी अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये फैसला किया और फुल कोर्ट तश्कील दिया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाले से, और ये भी कहा गया कि ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी जो कि एक तारीख साज दिन होगा। यकीनन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट समाअत की बराह रास्त नशरियात के लिए कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरों की तनसीब के साथ ऑडियो के बेहतर इंतजामात टेक्निकल अमला उसके लिए कोशा है, जबकि 5 कैमरे अदालती कार्रवाई को हर जाविये से कवर करेंगे। कैमरा वीडियो के साथ ऑडियो के इंतजामात भी बेहतर किए जा रहे हैं, जबकि ऑडियो को जजेस और रोस्ट्रम माइक से जोड़ा जाएगा ताकि नशरियात में कोई खलल ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समात अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर इत्तफाक किया गया और अब अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ PTV को हिदायत जारी की गई थी कि इस समात को लाइव कवर किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर जो इंतजामात थे उसका जायज़ा लिया गया और आज इन इंतजामात को तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर कुछ ही देर बाद इस समात का आगाज़ हो जाएगा। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया था और आज उसके बाद उनकी ये पहली समात है जो कि बराह रास्त नशर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट समात के बराह रास्त नशरियात के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरों की तनसीब के साथ ऑडियो के बेहतरीन इंतजामात के लिए टेक्निकल अमला कोशा है। 5 कैमरे अदालत की कार्रवाई को हर जाविये से कवर करेंगे। कैमरा वीडियो के साथ ऑडियो के इंतजामात बेहतर किए जा रहे हैं। ऑडियो को जजेस और रोस्ट्रम माइक से जोड़ा जाएगा ताकि नशरियात में कोई खलल ना हो। जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया, उन्हें बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से गुज़श्ता रोज हलफ उठाया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पहले रोज बगैर प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वो अपनी जाती गाड़ी में अदालत आए, जहां अमले ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया और पुलिस को कहा कि वो दिल जमी के साथ अपना काम करें, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। और उसी के साथ साथ इस मौके पर अमले से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज उनकी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, आप लोगों से तफसीली मिलेंगे, आप सबका ताउन चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए अदालत आते हैं, लिहाजा आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक किया जाए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा करी और अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करा दिया और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवा दिया है और पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। वफाकी हुकूमत का यह मौक़िफ़ है और इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएं। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओहदे का हलफ लेने के बाद समात के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता कई माह से यह मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने इस बात का इजहार मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस की बेंच से अलहदा होते हुए भी किया था और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 15 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच इस केस की समात करेगा और अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर इस केस की समात शुरू कर दी जाएगी। जियो न्यूज़ में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। क्रीम और फ्लेवर का ट्रियो। जब सही बीज तुम डालोगे, भर भर के फसल निकालोगे।
जरा पाकिस्तान का नंबर 1 कैजुला मस्टर्ड बीज, जिसने दी किसान को नई उम्मीद। चाबी किसके पास है? गेम स्टार्ट होने वाली है। बस यहीं तक चढ़ने का प्लान था। चढ़ने का नहीं, उड़ने का प्लान। अब भाई की एंट्री चेक करो। माउंटेन ड्यू यार है तो पार है। 9 petitions. 9 petitions. And may I know who the counsel for the 9 petitioners are? One is yourself. In 6, 7, and 12. 6, 7, and 12. It's myself and Imtiaz Siddiqui Saab. 6, 7, and 12. And 12, it is yourself. You will argue. And Mr. Imtiaz Siddiqui Saab, sir ji. No, who will argue? Sir, I am going to give a brief outlay. Okay. Achha, and then Imtiaz Siddiqui will take over. The rest of the petitioners, who are they? I think Naam batate rahe. Zaman Khan Wardig, petitioner in person from Lahore. Registry. Zaman Khan Wardig Constitution petition 10, my lord. 10. My lord. You are petitioner or counsel? I'm petitioner, my lord. In person. Okay, petitioner in person. ठीक है. The other petitions? नंबर 8 में मैं नंबर फर्क है 10. Mr. Hussain, can you please come to the mic, please? जी. मोहम्मद सैन चोटिया साहब लाहौर से वो नहीं आ सके, उन्होंने आना था। मैं AOR हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, तो मैं भाई आ नहीं सके का मतलब क्या है? क्यों नहीं आ सके? उन्होंने आना था, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ, तो मैडम ने कहा कि आप CP नंबर 8। I think then Mr. Irfan. आप बहस करेंगी या नहीं करेंगी या अडॉप्ट करेंगी आर्गुमेंट्स? जी अडॉप्ट करेंगे। अच्छा चलिए, और कोई पिटिशन रह गए? I think Mr. Irfan, Hassan Irfan has He's filed. from Lahore. I think he's appearing from Lahore. 19 में नहीं है कोई? अच्छा, CP 19 में। ठीक है। ख्वाजा साहब, we don't want to cut you short, but if you can be more precise, just appreciate that some of us have heard this matter and some of us are going to hear it for the first time. There was a question, because since the bench no longer, one member of the bench has retired, to reconstitute it. The question had also arisen whether I should be part of the bench. Then the related question would arise, should the other 2 members be part of the bench, because one way or the other our interests, maybe said our interests are affected. Then the related question arose whether all those who, inshallah, become Chief Justice, should they be part of the bench? Should their 2 senior judges be part of the bench? So I think the best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. So that is the reason why the full court has, all the judges have convened. Frankly speaking, let me be very clear. Why did I file this petition? No. We will come to your petition. I'm fully, we are with you, sir. The full court should be there. Achha, so since there are CMA number 4207 has been filed by Pakistan Bar Council, who represents Pakistan Bar Council? So they had sought full court, and there are 2 more CMAs, CMA 3166 and 3199. They had also sought full court. So these applications have become in a way allowed. Okay? So now we proceed to hear your contentions. The rest of you can take a seat. Khwaja Saab will first address, and then the others can address. I'll hand it over to Mr. Imtiaz Siddiqui, sir, because he's, to be very honest, sir, at the time of the, when this was first heard by 8 judges, Mr. Imtiaz Siddiqui led the arguments. He's fully prepared, but I would like to say a few words. Let's forget the past. Today is the first date of hearing. I'll say a few words, and then I'll leave the please to Mr. Imtiaz Siddiqui. I want to make it one thing very clear. When this Supreme Court Practice and Procedure Act
came into force, or became in the form of a bill and later became an act, I read clauses 1 and 2 thereof. Your lords have this act in front of you? I think one of the petitioners has filed it. It's CMA 5104. I don't know who is 5104. It's attached with it. Ji, please read it. Argue as you please. By the end of your petition, which is the petition that you? I will be starting from 6, sir. Because 6 is the one when the orders have been passed. But may I also say, you started with the Practice and Procedure Act. You wanted to read it. I'll read it. Before I do that, there is an order dated 2nd of May. Ajay sir, let's forget about the past. Because we are not. Don't do this. Okay. So I'll say let's bury the past. Don't bury it. It's past. You can't bury the past. All right. For the time being, argue as if you are arguing for the first time. Thank you. Well, I do say here. I may ask a question. Khwaja Sahab, idhar dekhen. You have endorsed the sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5 in the event if the law is upheld. There is a right of appeal that is provided under this law. In that case, then how do you visualize that right being exercised? I was going to come to that. I'm very thankful to leadership, because if the full court is going to hear it, then I have no right of appeal. But in the event, since we are hearing the vagaries of this law, what will happen to this right if a full court is now going to proceed with the matter? In fact, when I go through the law, there are so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised by one party? It says that an appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Khalid Sahab, if I may interject, you please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. Do you want to read the Act or you don't want to read the Act? I will read the Act now. I'll start with Section 1. But first of all, let me say this one. I would just state this thing, that by the end of your honest tenure, if I'm still alive, I would have completed 50 years of practice in this honorable court. Can you please read? No, let's not do that. Let me say. This is public time. When I saw this act, let's read it. When you saw it, we're not interested. See the Section 2 thereof. Please read the whole act. I read it, sir. Whereas Article 191, I'm reading the preamble. 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Now, at present, there are the 1980 rules which govern the procedure here in the Supreme Court. Before that, there were the 1956 rules. The 1980 rules were on account of a judgment which came in 1979. Ajay Sahab, please focus. Okay, I'm focusing myself. We know the 1980 rules. Background. No, please don't. We don't. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading, you started giving the history of 1980 rules. We know that. If he'll ask a question, please answer that, but proceed with your arguments. I
have said about this 1980 rules for the simple reason that if I read now section 2, it says... Please continue, don't jump to section 2. All right. And whereas Article 10A is of the Constitution, mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence, and Islam guarantees right of appeal. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, this law is being enacted. The court will see that there is no mention of item 55 of the federal legislative list as far as this preamble is concerned. It is silent, because that is the basic what can the parliament do? Parliament is not omnipotent. It has to go according to certain constitutional limitations. That principle of old principle that the parliament is supreme means that they are omnipotent, led by Dicey and influenced by Blackstone and Co. So we all agree that Parliament has limitations. This law doesn't say that. Don't insert words which are not written there. Law doesn't say Parliament is omnipotent. Just restrict yourself to the act which you have challenged. When I say this thing, that this very preamble does not mention. It's noted. Read it on. Okay. And whereas it is expedient to make a law providing for certain practice and procedures of the Supreme Court. It is hereby enacted as follows. This act shall be called the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and it shall come into force at once. Constitution of benches, that the crucial question which arose. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two next most senior judges in order of seniority. Now, one of the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Because if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस बात को पढ़ लें हम, ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है, क्या नहीं. Thank you very much. Sir, which rule were you referring? If they want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this: that this frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting at the full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together, and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this side. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office? Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm supporting... What is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc.,
is the domain of the Supreme Court itself. If this is your proposition, I think you should read the law first, Khwaja Sahab, and then formulate the points. Let us first formulate. Act पढ़ लीजिए उसके बाद फिर एक-एक को देख. It is only 2 pages act. It is only. Let me follow the Chief Justice. Let me read the law and then make my submission. If I may make your job easier, undoubtedly it's sometimes very difficult and disconcerting if I know it's very difficult to answer questions. If you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. If one of your associates jots the questions down, please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act, you just point out, either you say this entire act is ultra vires a constitution, that's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take, and when you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries. Okay? So, please continue with the act. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55 of the federal legislative list, which spells out whether the Parliament can make enactments relating to Supreme Court. If I may read 55 at this stage, it may be. Argue as you want. Well, all right. I'm just saying that your Lordship should note item 55 of the federal legislative list. Let's read it together. You wanted to read it. Let's read it. We'll read it together. Khwaja Sahab, I think before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says? 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55. But Article 70 gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate. I will skip that. I'll go straight on to subclause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule, sir. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis-e-Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142, subject to the Constitution, Majlis-e-Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list.
Then I take your lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution, again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution. Your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also. I'll come to that also, because when I read 55, then it will be clearer. If I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it. And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Point is noted. Constitution and law. Point is noted of my lord that what will be my proposition, and also what Justice Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions and to say how this law is not obtainable. But may I read 55 very straight? Please do. Because your lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject to the power of the Parliament under 142 and 74. Just read it as is. Don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list, and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की फुल कोर्ट समात, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समात आपने मुलायजा की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की फुल कोर्ट समात से मुतालिक आपको अपडेट करें। दरखास्तों की समात चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समात कर रहा है, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए 9 दरखास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजारों से दलाइल मांग लिए और रिमार्क्स दिए कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए कि ताखीर के लिए माजरत चाहता हूं, फुल कोर्ट इजलास चल रहा था। फुल कोर्ट इजलास में फैसला किया है कि सरकारी टीवी पर मुकदमा लाइव नशर करने का पायलट तजर्बा किया जाए। एक कमेटी तश्कील दी है जो बराह रास्त नशरियात के मुमकिन या नामुमकिन होने का जायजा लेगी। हम में से बेंच के कुछ मेंबरान केस पहले सुन चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मामला सुना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की फुल कोर्ट समात, और इससे मुतालिक आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समात कर रहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए 9 दरखास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजारों से दलाइल मांग लिए। ख्वाजा तारिक रहीम के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दलाइल जारी रहे, और इस दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क्स भी सामने आते रहे, और ये
तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम में से बेंच के कुछ मेंबरान केस पहले सुन चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तें काबिल समात करार दे दी गई हैं। दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। फुल कोर्ट बनाने की 3 दरखास्तें थीं जिनको मंजूर कर रहे हैं। फुल कोर्ट इजलास में फुल कोर्ट समात करने की मंजूरी दी गई। आवाम हमसे 57,000 केसेस का फैसला चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने यह भी रिमार्क्स दिए और इस केस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तें काबिल समात करार दे दी गई हैं और इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। फुल कोर्ट बनाने की 3 दरखास्तें थीं जिनको मंजूर किया जा रहा है। फुल कोर्ट इजलास में फुल कोर्ट समात करने की मंजूरी दी गई है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हम अवाम हमसे 57,000 केसेस का फैसला चाहते हैं। आपको बताएं कि इससे पहले जब आगाज़ हुआ केस की समात का तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूं। फुल कोर्ट इजलास चल रहा था। फुल कोर्ट इजलास में फ़ैसला किया है कि सरकारी टीवी पर मुकदमा लाइव नशर करने का पायलट तजर्बा किया जाए। ये भी कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने और कहा कि एक कमेटी तश्कील दी है जो बराह रास्त नशरियात के मुमकिन या नामुमकिन होने का जायज़ा लेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समात जारी है। Why I came before your lordship is that the functions which are there with the Supreme Court, there should not have been there with the Parliament, because that institution that has its own. Today they say that how you are going to have the benches. Tomorrow they will say that such and such bench will hear this case, such and such bench will hear that case. Please let's not go into what they may or may not do. Why I'm saying is this, that if I give them unbridled power, then anything can happen. It pertains to your attack on a particular piece of legislation. I'll say this thing. No. What Parliament decides to do future, you can bring another petition, we can look at it then. Restrict yourself to your case. Please proceed. I will say this in the manner that this clause 2 is beyond the powers of the Parliament. 3, and when I'm arguing, my lord, my associate will explain that 184(3) is not the only thing which is regulated by the Supreme Court rules. If your lordship would have the 1980 Supreme Court rules in front of you, there are the different types of jurisdiction which are available to you. Shall we finish with the Act quickly? Oh, okay, I'll finish with the Act, my lord. Exercise of original jurisdiction of the Supreme Court. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. I will simply say on this thing that this is... Sir, on your right side, but not as much right as previously. Yes, my lord. Over here, question, so your associates can note this. This power that Section 3 purports to confer on the committee with regard to examine the question and therefore act as a gateway perhaps, is this a power, or is this a judicial power, or is this an administrative/statutory power? Because 183 is ultimately a judicial power, because then it seems to me that the latter part of this section says it shall constitute a bench. That seems to imply that the power exercised by the committee is not a judicial power but an administrative power. So can Parliament whittle down? This is a question, please note. Yes, it's judicial, and in fact that will be exactly my proposition. Please hear his lordship. Sawal to sun le. Can the
Parliament whittle down the judicial power under 184(3) by providing that this committee will act as a gateway and block out in exercise of administrative power anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. So you kindly note the question and you address it at an. And I will go even further than that. And also a supplementary question connected to this. Earlier, the Justice solely had this power. So there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court and the judicial pronouncement on that as to what procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would recall reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, Raja Sahib, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench, which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches, that is power universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. I'm not answering. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your submissions. Just note the question. I may add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I'm being condemned. I'm not being heard. Who is the party is not being heard. Who is when you're using the word I? Who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक सेकंड तहम्मुल
the litigant, that leads me to another question. Your petitioners, do they have an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? No, I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm now asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client? I have no personal interest. You meaning your client? But let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I'm speaking for the petitioner, and I'm saying this thing that we brought this petition in the interest. You got the answer. Now please proceed. I've got the answer. In the interest that the law should take its course. The constitution must be upheld. And I'm also saying that I'm sure with such preliminary sitting there, of the whole object is that, first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, Khwaja Sahab, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. Khwaja Sahab, I'll refrain from that. Let us proceed with the act. Yes, sir. Khwaja Sahab, just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and two senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. I think your Lordship has possibly not. I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this Honorable Court. Instead of Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this Honorable Court. Instead of let us clarify. Is it your argument that Section 3 affects the judicial powers of this court? Yes, sir. Curtails judicial powers of this court, because this court means the Chief Justice and all judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's not my point. 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. That too an exercise of administrative powers. Yes, sir. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position, so many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions, and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. To be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? Far right. Please. What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I will say that the Chief Justice powers will be whittled down, as if this law goes through, the powers will be whittled down, but we'll explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in,
and the latest one is, of course, 2000. I will continue. Let me आप नोट कर लें या बाद में कर लें. Let me continue then. Mr. Khwaja, I will add it. Then is a question. Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice. I think that's the moot question. The answer to that is that it's been noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is the Chief Justice and so many other judges. Fajeza will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition. I've not even heard, and 3 judges or 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184.3 will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is. Now, next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object? First, say I object to this provision, or you endorse it. I will say this, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just safe? Is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something. We should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same equipment. So by saying this thing, not less than 5. Then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Saab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir. I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. How the benches are to be. आगे बढ़ते हैं. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your suggestion. No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that this should be changed, then it is your functions. It is not the function of the Parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Marisa. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model
where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches. The question is this, that model, that aspect was not accepted by the framers of the present constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this, if that was not accepted, does this not require constitutional amendments? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question. Please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी। मैं इधर हूँ जी। जी सर। मैं बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर। सुन लीजिए सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर मैं नोट कर लिए, जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता, ठीक है? अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। आई एम क्वाइट आई हैव वेरी आगे बढ़ते I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। If I may, कोई problem नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, sir. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Yes. Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not ordinary legislation. आप नोट कर लें, आप ना दें. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja Sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2-member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199, here आर्टिकल 183, 84(3).
तो ये क्या दोनों में Sir, it is not, गलत है तो फिर वो भी गलत it is not will answer this thing that what Parliament can do and what Parliament can do many things. Why my Lord has said so, but there is a procedure provided. Will answer that. भाई साहब अभी जवाब की जरूरत नहीं है आप प्लीज I will not answer. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़िए Khwaja Sahab, You have collected 100 questions. Just here. The law reforms ordinance of 1972. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clog on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Law reforms ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the law reforms ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir. And appreciate it. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. You have challenged a law, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned, is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in Clause 2, whereby my 184.3 application will be disposed of? The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am. No, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this Section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in Section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What then you go and move a bill in Parliament? We are saying, are you opposed to Section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, If I say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this,
that this Section 5 goes beyond the powers which were there with the Parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under Section 184(3). Okay. And this appeal, this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that will be given, but the manner in which it has to be given. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the Constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to Section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Kindly stop. So this order, the question to you has two parts. So the first part is this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। छः को पढ़िए, Six है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that. Okay, it's okay. Chali, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interment filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, you say, in a civil court into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191
if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-virus. Ismail Khwaja Sahab. Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. Sir, we will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Raja Sahab, if I may have a supplemental on what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, with due respect to my lord. ख्वाजा साहब ये एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को, आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट, आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी दिया मैंने सर, करिएगा ना। मैं मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शायद इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं, इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
मगर at the same time, while you are reading section 6, it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra vires, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra vires and right of review intra vires. No, what I'm saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal. But you can provide the right of review. Under 184.3, if 184.3 right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाहिद साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना, ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो, हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं या पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल है वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। अब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे। मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज।
आप क्या सोचते हैं this act has been passed in the public interest? क्योंकि section 5 subsection 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और उसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में pass हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same alfaz है, वहाँ से वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गुमेंट से हम ये समझे कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी। सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा। ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसका जवाब देंगे जी आपको। इसीलिए तो another question. Where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additional through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना। Number 7 is application for fixation of urgent matters. And तो हो गया। Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। आपने दरखास्त अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ उस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी, मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। इस पे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं लगाता हूँ। आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की, मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार्स तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दे, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है। मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है। और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते कभी। 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे, आप खुश थे उस बात से।
तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, शायद आप बेहतर कर सकेंगे। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पे। शुक्रिया। मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लफ्ज लिखा है अग्रीव पर्सन, ठीक है। अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों। अग्रीड सर, जरा अग्रीड, आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूं इनफरादी नौयत की। अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। रेकोडिक का केस आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक सिमत रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है जी। मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है। आप मैं ये आंसर कर दूंगा। मैं ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा, और वो 2 कंडीशंस हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is your, you have read the law now, iske upar aap bata dein ke what do you have to say? इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब, इधर हूँ जी, जरा 5 मिनट लगते हैं आपको मुझे देखते। नहीं सर, आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल का आगे चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में। तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पड़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ। फौजी साहब, to your right. हम ये भी देखेंगे through this petition there is an order of this court. The act has been suspended. Whether in presence of that order, full court can be constituted or not. ये भी जरा देखें। Court can be constituted or not. आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैंने तो प्रोपोजिशन कर दी, ठीक है। आप आइए, कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटीशन में जरा बता दिए। तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ। टू राइट ऑफ 2 काउंसिल इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर सेपरेट पिटिशनर्स। 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई जी। चलिए बताइए। Honored, the proposition requires to be refocused. There is
The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184.3 can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court, at various point of time, has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court is constitutes. मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है. ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184.3 की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है. ठीक है, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं. मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184.3 में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आते, हमारे हाथ बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184.3 का इंतखाब किया है. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा, 189 पढ़ लें जरा. ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में. जरा पढ़िए 189. It's a principal law be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है all other courts, not the Supreme Court. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए. अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है on all other courts, which means high courts and your lordship allows me to make a submission. Other courts की बात कर रहा हूँ. No, I will not be able. ठीक है, आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें. Please, lordship. If I may ask you, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, lordship. It seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? And I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value, and it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect, मेरे ख्याल में आप मेरा सवाल समझिए नहीं सही. मैं आपको सर मैं उधर आ रहा हूँ. नहीं आप नहीं, मेरा सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए. यकीनन सर 5 मेंबर बेंच का जजमेंट 3 मेंबर बेंच पे बाइंडिंग है यकीनन. अब हम आर्टिकल 189 की बुनियादी बात कर रहे हैं, अदर कोर्ट्स.
अगर ये बात है तो ये अब फुल कोर्ट, इससे बड़ी तो फुल कोर्ट नहीं हो सकती है ना। हमारे ऊपर कोई प्रेसिडेंट लागू नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। अगर यही इशू किसी लार्जर बेंच ने फैसला कर लिया होता वो हम पे होगा, मगर एज अ रूल अदरवाइज जजेस डिसेंट भी नहीं कर सकेंगे ना, वो तो बाइंडिंग है, डिसेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आप जरा वजाहत में ये कर रहा हूँ, ये नहीं है कि 4 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड, 2 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड कर देगा 5 मेंबर बेंच के फैसलों को। बिल्कुल ये मेरी, आप इसका मतलब वो बात समझ नहीं पाए अदर कोर्ट्स, मगर अभी तो वो मफरूजों में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये जो मौका है इस पे पूरा कोर्ट बैठा है, तो ये कोई प्रेसिडेंट जब आप साइड करने निकलेंगे तो वो प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा जब तक आप आर्टिकल 184(3) का दरवाजा नहीं खोल पाए। ये इम्तियाज साहब, इसको मैं जरा सिंप्लीफाई कर दूं एज आई हैव अंडरस्टूड। ये पूरा लॉ पढ़ लिया गया है, इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। एक, पहले चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार था कि डिस्क्रिशनरी चॉइसेस करे, ठीक है ना, उसको पार्लियामेंट ने डाइल्यूट कर दिया, रेगुलेट कर दिया। That's all that the parliament has done, कि उन्होंने 3 जजेस को इकट्ठा कर दिया, कोई बाहर का कोई भी नहीं आया। It's still the chief justice and the 2 senior most judges. इसमें तो किसी का भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो इंटरनल या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है वो मजबूत हो रही है। सेकेंडली, एक राइट ऑफ अपील उसको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके पास पहले कोई राइट नहीं था। नाउ इस 2 चीजों के अलावा इस पूरे कानून में कुछ नहीं है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स आप पिटिशनर का वायलेट हुआ है जिस पे आप 184(3) में आए हैं? ये तो अगर योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड, सुन ले, अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म किया है, ये तो आपको सराहना चाहिए। ये तो आपके बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करेगा। हाउ डज दिस respond to this? May I respond? और सदीकी साहब, इसी में मैं ऐड कर दूं, सवाल ये है कि अगर आपके मुताबिक चीफ जस्टिस की अनलिमिटेड पावर्स ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर जिस तरह माय लर्नेड कॉलीग इज जस्ट मेंशन्ड कि अगर वो विटल डाउन कर रहे हैं पावर चीफ जस्टिस की, एक की जगह 3 लोग 4 लोग मुशावरत के साथ चलेंगे, तो एकदम इसलिए कि चीफ जस्टिस की पावर कम हो रही है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी एट स्टेक हो गई है। ये नहीं देख रहे कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो बढ़ गई है, कि एक कंसेंसस से आगे चलने का इंतजाम हो गया है कि आप लोग सोचें कि आगे कैसे चलना है, कोलिजियल तरीके से चलना है। सारी दुनिया में बहरहाल ये हो रहा है, कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है, क्योंकि अब सब जगह कहीं जाएं तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है, कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। तो हो रहा है तो इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की। एक चीज तो इस चीज को जरा देखिए कि इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनीपोटेंट पावर्स के साथ, कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, इसका भी जवाब जरा दीजिए। Mr. Siddiqui, the fundamental question here is who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of the Supreme Court? It is a function. Or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary. As I have understood, is your argument? I am saying, सिद्दीकी साहब एक इसमें जरा मैं ऐड कर दूं, 191 आप पढ़ते हैं ना, तो 191 में लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर पर आ सकते हैं। तो 191 तो ये इन्विजिज करता है कि कानून हो सकता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे। पार्लियामेंट का तो नहीं हो सकता। सुन लीजिए, नहीं और कहाँ से कानून लाते हैं आप? हम पार्लियामेंट से लाते हैं पाकिस्तान में कानून। जजमेंट लॉ, नहीं लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कन्वेंशन। सुन लीजिए
टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से लॉ एक एग्जिस्ट कर सकता है, आइन मानता है कि ऐसा कानून हो सकता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करे। अब सवाल आता है वो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगी पार्लियामेंट, तो आप हम एंट्री 55 में चले जाते हैं कि ऐसी पावर वो दे सकता है कि नहीं। अब इसको ज़रा ओवरऑल स्कीम में देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शन 7 पढ़ा जा रहा था ये वगैरह, हमारे पास अर्जेंट लगते हैं, कितने लगते ही नहीं केसेस। ये आम रोजाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता, अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है, हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं वो कहता है कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर, 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ, तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है। इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें, लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में रास्ता आ गया। 55 एंट्री, सारा सवाल एंट्री 55 का है। एंट्री 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकते, उसमें बताइए कि क्या गलती है। सिर्फ इतना सा सवाल है। It's your lordship. Allow me a breather. सदीकी साहब एक सवाल। I will answer all these questions. बिस्मिल्लाह कीजिए। सदीकी साहब सांस लेने, My lord, I would answer all these questions. सांस लेने से पहले एक सवाल और नोट कर लें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, खड़ी ना ना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, nowhere it is mentioned that the supremacy or independence of the chief justice. I would answer this question. सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया। चेंज कर दे सर, एक मिनट, रूल को चेंज कीजिए। सुन लेना सर, रूल के तहत। अब रूल क्या होंगे? अगर आप 191 पढ़ेंगे, आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ताबे है। ऐसा नहीं है कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड, कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में। अच्छा, I don't want to comment on that. It is not my stature. It is not my function. इसकी कहीं और मुमालिक में बात सुने प्लीज, इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं? किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं? मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे What the theme appears to be. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए। The theme appears, I just a sentence. Just one question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए, why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held. जजमेंट तो बिल्कुल सही होती है सर। देखिए आपको बताता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कौन सा फंडामेंटल राइट? I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है, इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी। 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना, अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते। अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है। इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते। सदीकी साहब ये सवाल लिख कर रहे हैं आप? पता नहीं।
हम तो बोल ही जा रहे हैं, आप हाँ करी जा रहे हैं। साथी खड़े ये कोई काम नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 ऐसे नहीं कहेंगे, पढ़िए, एक पढ़िए और बताइए। I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. आप ये whole of the act को ultra vires कहते हैं या there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ठीक है चलें। Mr. Siddiqui. His lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please, Your Lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. So is it not a violation of fundamental rights? Yes, and that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहा है हमारे सिस्टम को और आम आदमी की जिंदगी आसान। सर देखिए मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं, हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, सर सुन तो लीजिए ना प्लीज कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इस मुखातिब हो जाए ना I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए, अगर आइन के इन अकॉर्डेंस विथ है यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। May I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordship. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून है, यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था 191 में, यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शैल नहीं है, इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट टू लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली। थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम इंडेटेड टू माय लॉर्ड। दिस इज द प्रोपोजिशन। एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए ना, सारे आर्टिकल के ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A
Article 10. Article 10, sorry, my lord. 9. Yes, any numbers not there. बताएं ना. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं. वो मैं जानूं और पार्लियामेंट जाने आपका क्या ताल्लुक है? No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship. This is not a constitutional. तो बहुत ही नॉवल आर्गुमेंट है. बड़ा जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है. Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the Supreme Court. मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था. शुक्रिया. लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे हैं. I have to assist you the way the law in this country is. चलते आगे ना. ऐसे सदीकी साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए. आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले. आइन तो कहते हैं देखे बगैर आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ. सर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस. नो आई से आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर. नो आई एम. अभी आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करूंगा. लेकिन सब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ कौन सी इन्फोर्समेंट करना 9 के बाद 10 में क्या है? 10 में कौन सा है? नो, ये तो अरेस्ट. No person who is arrested shall be detained. इस बात से हमारी. सर मुझे आप प्लीज. नहीं ये नहीं आपके. मैं सुबह से शिक 1 से शिक 260 तक पढ़ूंगा. नहीं सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इट्स पब्लिक मनी. ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं. आप उसकी हमें रेलेवेंस बताएंगे. सॉरी, ऐसे नहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे. साहब, जब आप मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, अब उसके बियॉन्ड आप जाए. आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था. वो बता दीजिएगा. मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है. मैं क्या ये रहा हूँ कि इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा. आप चाहते हैं कानून, आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार हो. मैं नहीं चाहता. आपने दिया रूल्स के अंदर. नहीं हो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना. हमने छोड़ दी सर. आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिटल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? यहाँ पे the power has been given to the chief justice and to senior most judges. ये बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस आपको बहुत पावर दे रहा है. लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10. आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर. एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का. सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो. योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड दैट व्हेन a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना. सर मैं आपको, आप मुझे अलाउ करेंगे तो इजाजत बताइए. The law, the constitution requires, under the constitution, and I will read the relevant article subject to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. आपने हमने जो आपसे शुरू किया था बुनियादी हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी. मैं तो आप जवाब नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज. आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा. ठीक है, आप देखिए मैं भी वकील रह चुका हूं. जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है. मगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना. जैसे विटनेस कहते हैं ना, अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया ये बता दें बस. अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से
فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں. پہلے اس پہ آئیے تاکہ وائی ناٹ 199 یہی پاور ہائی کورٹ کے پاس ہے, وہاں کیوں نہیں گئے؟ سر میں آپ کو نوٹ I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. پڑھ لیں سر میں نے پڑھا آپ کے سامنے. بس یہی آرگومنٹ ہے آپ کا. سر میں پڑھ رہا ہوں آگے. نہیں آپ بتا ہی نہیں رہے, کوئی پروپوزیشن ہی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں آپ. My proposition مجھے آپ my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the Constitution, and the Constitution requires that ہم نے فیصلہ کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے. The Constitution requires that the legislature will make its own rules. The Constitution requires petition. یہ آپ نے ابھی بات کی, میں نے نوٹ کر لیا. 3 different organs of the state ہیں. They will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. اور یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بنیادی باتیں تو پتہ ہے نا, آگے بڑھیے نا. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. سمجھ گئے. اگلا point. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. اور ججمنٹ ہیں آپ نوٹ کر لیں. میں سر ججمنٹ پڑھنے میں چاہوں گا this is so fundamental a question. there are numerous judgments. یہ اس بات کا تعین کرنا جی آپ کے پاس اختیار ہے. جیسے منصور شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ اختیار ایکسپریس ہوتا ہے, یا تو ہم ریفرینڈم کرا لیں جہاں ہر مارشل اور ڈکٹیٹر کو 98.6% ووٹ ہمیشہ ملتے ہیں. سن لیجیے نا ذرا پلیز, تسلی رکھ لیں. یا ہمیں کیا پتا لوگوں کو کیا چاہیے, اس کی عکاسی ان کے نمائندے, الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو الیکٹ کریں ان کی مرضی ہے, وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ہم یہاں تو کوئی پول اگر ہم ادھر کھڑ کر میں پوچھ لوں سب سے کاز ان فیور آف دس لا ہے, آپ کو کون حق دیتا ہے یہ کرنے کا؟ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں. آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے بس 8, 9, 10 بس کوئی آرگیومنٹ ڈیولپ کیجئے. حضور ایسے نہیں ہوا آرگیومنٹ. یور لارڈشپ صاحب, امتیاز صاحب ایک دفعہ پھر ایک چیز کلیئر کر دیں. اگر یہ قانون صرف چیف جسٹس کے اختیار کو ڈائلیوٹ کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے؟ آبجیکٹیو اچھا ہے, پروسیجر انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک سیکنڈ, اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اور پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس ہو رہے ہیں. سیکنڈلی, اگر رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس سے وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, اس سے انفورس ہو رہے. تو اب آئین کو مد نظر رکھیں گے کہ نہیں؟ سن تو لینا. اب آپ کا صرف کوشچن یہ رہ گیا ہے کہ جی یہ بہت اچھی چیزیں آپ ان الیکٹڈ ججز کر لیں, لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. بھلے آپ ریفیوز بھی کریں وہ پھر بھی بے بس ہے. چلے ہم آپ کی یہ بھی بات بے بس نہیں ہے. ایک سیکنڈ, اب آپ بتا دیجئے کانسٹیٹیوشن میں ایگزیکٹلی 191 پڑھ لیجئے گا, اس کا مطلب ہے نو فنڈامنٹل رائٹ. مجھے ابھی تک آپ نے نہ آرٹیکلز لکھوانے دیے ہیں نہ مجھے سبمیشن کرنے دیے. بتائیے پلیز بتائیے. آرٹیکل 4, 9, 10, 10A فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو ہم انفورس کرنا چاہتے ہیں. سر وہ پڑھیے پلیز. سر میں نے آپ کو کہا ہے کہ when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective, and if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. سمجھ آئی آپ کی بات. ہوئی ہے کہ قانون کا آبجیکٹو تو شاید عام آدمی کے لیے اچھا ہے, لیکن پروسیجر جو اڈاپٹ ہوا ہے یہ ہمیں بنا لینا چاہیے تھا, پارلیمنٹ نے کیوں بنا دیا, یہ سوال ہے. Mr. Siddiqui is not access to justice
fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid reasons. In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. As sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to say, declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution, that independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, I'm speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the three-member committee. Who is Parliament to say it's a three-member committee? Why shouldn't it be a five-member committee? Why shouldn't it be a seven-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 3 judges is okay with us. 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section कौन सा है वो आपका? Section 4. Tomorrow Parliament says जी एक law बना देती है जी. I don't know, family matters are to be heard by a bench of not less than 7 judges. Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था. वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना. उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखें जी उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है. Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ. आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें. आप सवाल नोट कर लीजिए. आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाह रहा हूँ सर. फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके. आप चलें थोड़ा बढ़ाएं आगे बात को. With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So
ओहो, आपने कहा खाली तरीका ठीक नहीं। अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independence of judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। या बैलेट होता है या रेफल। कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी में बिठा दूं। ये चीजें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अंदर एक बात की जा रही है, आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है। It seems to me that even now if we go by the literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is again in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है, और नहीं आप सुन लीजिए ना, आप तो हर सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल आप दलाइल देके ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से। आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए। May I proceed? जी प्लीज। I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective, and this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप जज नहीं हैं, आप हर चीज का मैं जवाब दे रहे हैं। May I proceed? प्लीज डू सो। आपको इसके एक जरा सप्लीमेंट्री आप चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। My learned brother has asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment
or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. Siddiqui साहब जरा Siddiqui साहब एक क्वेश्चन आपका कहना ये है कि 3 members अगर बैठ के benches बनाएंगे as per this law तो ये independence of judiciary पर के खिलाफ है तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे या ऐसा रूल बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर कर तो सकते हैं आपने अगर एक बंदे को अनलिमिटेड पावर्स है माय लॉर्ड जस्ट 1 minute मैं रिक्वेस्ट माय ब्रदर्स इनको बहस तो करने दीजिए हम सब सवाल बाद में कर लेंगे आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू कीजिए Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. So fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law if ये तो आपने आर्ग्यू नहीं किया अभी तक मैं ये तो कह रहा हूँ आप हमें रोकें आप क्या मुझे आर्गुमेंट सुन लीजिए मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है आप बताएं ना हमें शिक दें कायरीन की डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल इसी पे आ जाए यही सवाल है देखिए अगर देखिए मैं आप देखिए आप हमसे ज्यादा समझते हैं वकील हैं यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं ठीक है मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी वो हम अपने अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे अलग अलग राय लिख देंगे ठीक है मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए हम उसको नोट कर लेते हैं हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछे नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी The concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी. Article? Article 176. जी पढ़िए Lord, Article 176 says the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first step is the appointment of the Chief Justice. He is the centrifugal force, he is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please chaliye na, don't state the obvious, it's written there. This is really, no, sorry to say, आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है सर मैं आप ऐसी बातें तो ना करें हजूर सर आप मुझे आर्ग्यू तो आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया I am interpreting, I am just giving your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. It's not. It is not. I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume to understand the dynamic of Article 176, that assume there's a Chief Justice and there's no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We are not here. We are not here in a theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You've challenged that law. Argue that case. Let us proceed further, my lord. Let us go to Article 87.
Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. Majlis provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or, as the case may be, the Chairman may, with the approval of the President, make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the Secretarial Staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state, profound, as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटरी हमने तो नहीं बनाए लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं साहब. सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना. हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे. अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए. सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191. उसकी तशरीह कर दें, खत्म. ठीक. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from act of Parliament? Yes, it is. Law is this is something I've never heard before. Yes, sir. Let me allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law and rules. And please, I'm not going to expect this kind of arguments before the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your Lordship extraordinarily good argument. If your Lordship is inclined to ridicule me like that, I will not. I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your Lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताएंगे जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, बेचारों को छोड़ दे सर. छोड़ेंगे नहीं हम. मैं बेचारों में ऐसे ही हूँ. हाँ नहीं. मैं भी नीचे से केसेस कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में वो लोग करते हैं क्या होता है फिलिबस्टरिंग कि जी चलते रहो. अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा. अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं. तो ये बात आधे घंटे से सुन लो सर. अच्छा चलें. If I've got you correctly, you're saying that law is not only the act of the Parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. Assume. The question is whether the Parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the Parliament can't do it. Rules are imperative. If your Lordship would look at Article 8, if your Lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, सर, ये सिंपल हो गया है.
आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I'm not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, and I'm trying to assist your lordships. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191 they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense, and they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? Lord, not a law? In ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically about this. Within the context of Article 199, this is not law. It is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8, and judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as Act of the Parliament. Yes. Whereas Act of the Parliament can be considered as Act of the Parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the physiology of Article 191 manifests that this is not an ordinary Act of Parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the superior courts. Do you think, or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law, that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It says subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law.
or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. Maybe it cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. And we go back because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law, which includes case law or judgment law, even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judgment law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस लॉ एक्सप्रेशन से enactment is excluded, but even a usage or a custom would override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me, just follow your Lordship's consumption. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than the ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the Parliament cannot encroach upon them. This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस fundamental उसको clear कर दें. Do we have to read into the expression law that it is only confined to the judgments of this court and the precedent law? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the constitution themselves and violation cannot take place. ये जो law है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता ये किस कैटेगरी का law है ये category sir unconstitutional law है ये आता ही नहीं है. In which category you will fall this law because you this is act of the Parliament. 191 the definition of law is something else which you are trying to This is an act of the Parliament. It comes out of the outer scheme of the word law, and there are other sources of law. It is out of the word scheme of law. What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been used? Yes, what I'm saying this is that Article 141 and 142 relate to article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. Under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this law? Because Article 1 develop a new jurisprudence in this case. The third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule.
and it cannot be read in isolation. What it means is this, that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament. No, if you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, तो उसमें तो पावर है ना कि पावर्स लॉ आ सकता है. सर लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर एग्जांपल पढ़े ना, सप्लीमेंटल पावर्स भी दे सकता है. सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं है, ये बहस आप ये इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किया जा रहा है. तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि नहीं. आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं बना. सर मैं बताता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन हो सकती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता. देखिए ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है. एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज कानून ऐसा हो सकता है. उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है. अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन की एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट. सर क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में. एक कानून ऐसा हो सकता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है. आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें से वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा. सर दिस item 55 first makes a prohibition. वो हमने पढ़ लिया. मैं आखिरी लाइन की बात. सर आपने पढ़ लिया है, मैं भी सारी जिंदगी I've been rubbing shoulders with lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. इसके ऊपर तो फुल स्टॉप है. इसको पूरा पढ़िए ना मिला के, बिट्स एंड पीसेस बिट्स एंड दोबारा पढ़ूंगा तो कहेंगे कि दोबारा पढ़ रहे हैं आप. नहीं, इसमें आगे जाके jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. ये jurisdiction and power पे नहीं आप लॉ बना सकते. आगे चलें. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court. ये बना सकते हैं ना, enlargement हो सकती है. आगे बस enlargement के लिए भी there has to be a specific, ये जो language used है, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? आगे पढ़े, अगर आपसे आगे पढ़े enlargement and the conferring thereon of supplemental powers. सप्लीमेंटल पावर्स पार्लियामेंट लगा सकता है, दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को. सप्लीमेंटल पावर्स ये है कि आपको वो कह सकता है कि आप फाइनेंस से ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या आप ये लिटिगेंट को कोई अपील आई है तो उस पर ये टिकट लगा के पैसा सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट हो सकता है. ये सप्लीमेंटल पावर्स है. वो ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस साहब अकेले फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इस बात को. पावर दे रहे हैं कि चार और लोग नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो रेगुलेट कर रहे हैं पावर ऑफ द चीफ जस्टिस. इम्तियाज साहब रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन एंड पावर्स. दो पीस में पढ़े ना आप प्लीज. देखिए इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन है इसका, एज सच एक्सटेंट as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. एक एंड के बाद जो है ना वो conferring thereon of supplemental power. अगर इसको 191 के साथ आप मिला के पढ़ते हैं, subject to Constitution and law, तो ये वाली जो बात दो हिस्सों में है, इसको आप सप्लीमेंटल पावर को आप थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो वो एंड है, वो और नहीं है. ये कह ये रहा है, ये आर्टिकल 191, अगर आप आर्टिकल 191 को सब्जेक्ट टू का मतलब है कि जो लॉ में है वो रहेगा, इसके अलावा आपने कोई चीज बनानी है तो आपने रूल और भी आप बना सकते हैं. वो कह ये रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अलावा अनऑक्युपाइड डोमेन है तो फिर आप इसके अंदर कर सकते हैं कोई फ्रेमिंग ऑफ लॉ, और वो ये है
कि आपकी बात का जवाब है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, चले कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट नहीं हुई, एंड लॉ, तो जो लॉ उन्होंने बनाया है whatever it may be जो आप अंडर चैलेंज है, उस लॉ के मुताबिक आर्टिकल 191 में वो लॉ बन सकता है या नहीं बन सकता है? सर वो enlargement of jurisdiction के रेफरेंस से बन सकता है। enlargement of jurisdiction बन सकता है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने चीफ एक्ट के तहत उन्होंने राइट ऑफ अपील दे दिया आपको जो नहीं थी, रिव्यू को स्ट्रॉन्ग कर दिया, कमेटी बना दी, तो अब इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन किधर है? ये है बुनियादी चीज आर्टिकल 184(3) में जो आपसे पूछ रहे हैं ना। दिस इज नॉट अ वायरीज अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, वेयर इफ यू कैन चैलेंज द वायरीज ऑफ द लॉ, बट हियर इट इज आर्टिकल 184(3). दिस इज the enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. इम्तियाज साहब एक और चीज को गालिबन कंफ्यूज कर रहे हैं। There is a difference between इख्तियार of the Chief Justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. इस पूरे लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के किसी इख्तियार को नहीं छेड़ा। छेड़ दिया सर। It's only the Chief Justice, and the Chief Justice is Supreme Court. सर इस लॉ ने आर्टिकल रूल 9 को ऑब्लिटरेट कर दिया है और आपने इंडिविजुअल लेवल पे जजमेंट दिए हैं जहाँ पे रूल। एक सेकंड इम्तियाज साहब, सर आप मुझे एक सेकंड ना कीजिए, मुझे सुनने मेरी बात। सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार डाइल्यूट हुआ है ना सर। आपने चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपनी जजमेंट में कहा है कि रूल 9 जो है उसके तहत रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती जब तक चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, और ये जजमेंट आने के बाद ये फील्ड अनऑक्युपाइड नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द अदर जजेस? नो। फिर कैसे रूल में सुप्रीम कोर्ट को अलग करके इख्तियार दिया गया? सर आपने सरेंडर किया है, इख्तियार देना है कलेक्शन। आपने मुख्तार बनाया चीफ जस्टिस को कि हम चीफ जस्टिस की इस बात को हम ऑथराइज करते हैं। क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया? सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। 180 में आप फॉलो करते रहे हैं जो जजमेंट आपने जजमेंट दी है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट जजमेंट की बात कर रहा हूँ। जो जजमेंट्स आई थी वो इस एक्ट से पहले थी और वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द रूल्स। अब एक्ट ज्यादा बड़ा है या बड़े? सर आप जजमेंट तो पढ़ लें। तो आपने कहा है कि ये रूल्स जो हैं ये हायर पेडिस्टल पे हैं। नहीं पर वो ये आपकी जजमेंट है साहब। आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं। जजमेंट कितने मेंबर्स की है? सर जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 मेंबर्स। 10 हम कितने हैं? 14। अच्छा इम्तियाज साहब ओवररूल करना पड़ेगा सर, रीजंस देके। इम्तियाज साहब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो रीजन। इम्तियाज साहब ठीक है। Not that easy. इम्तियाज साहब referring to the Binder. I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. Sir, अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में। अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया ना, जजमेंट को नहीं हाथ लगाया। ओहो, उसका दैट लॉ फिनिश्ड टू एन एंड एंड दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सर आप कोई और बात कर रहे हैं, वो बात कानून की है सर। allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes, the distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules.
So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's the precise solution I'm trying to make with the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment argue kariye apna case. And aap apna case argue kariye. My case has been allow me to give your lordship a judgment on the issue. आप कितना वक्त और लेंगे? बस 15 मिनट और दे दूंगा अगर क्वेश्चंस ना हो तो नहीं Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Malak Asad Ali case. PLD? Malak Asad Ali Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. The question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your lordship has already said. So, now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice, upon the don't interrupt till I finish the question, upon retirement of the Chief Justice? Have I understood you correctly? No, my lord. Your lordship is not. Then your lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the बात हो रही ना असूल की बात हो रही ना असूलों की बात हो रही है असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है आप खुद बता ओके आगे बताएं आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक आगे बताएं जी सर आगे बढ़िए Similarly, your lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And what's the judgment here? My lord, 2010, my lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात citation तो दे देना 2010 कुछ चीज़ें मिल इम्तियाज साहब सर मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब सर दे दे मैं तक पढ़ लेता हूँ आप बता दें This is a constitutional body and the Parliament Majlis Shura, that is not 265 2010 which has the exclusive power to make laws. इसी में 265 PLD 2010 SC 483 विंटर का केस इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें सर इस जजमेंट में कहा है
یہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں کہاں کس پیج پہ کس فقہ کے پیراگراف میں the relevant page is page 535 and it goes on to page نہیں ہمیں ریلیونٹ پڑھ دیجیے 535 کہاں لکھا ہے یہ it goes on to page 536 the Supreme Court rules دیکھنا پسند کریں گے سر کتاب the Supreme Court rules پیج کیا ہوتا ہے پیج کیا ہے page Supreme Court rules are pedestrian promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. So how does it say it's higher than a law? وہ کہاں لکھا ہے The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Article 180 of the Constitution. اچھا اس میں دو بنیادی بات ہیں جو آپ کہہ رہے تھے اس کے برعکس ہے اور دوسری بات ہے whereof was to enhance the power of review. تو یہ تو انہانس کر دیا تھا power of review نے یہ کیا یہ لاء کا تو نہیں اس میں ذکر شاید کہیں اور ہو مجھے نہیں پتا سر اسی ججمنٹ کو پڑھیں اگر آپ ڈیٹیل میں کہنے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اس میں نہیں یہ کام نہیں ہوتا ہے وکیل کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرے فلاں صفحے پہ اس پیراگراف میں یہ نہیں کہ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں ہمیں ڈرائے نہیں آپ صرف وضاحت کر دیں میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں پیج بتا دیجیے پلیز صرف پیج بتا دیں ہم پڑھ لیں گے خود اس پہ یہ بات نہیں لکھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ 536 ہاں یہ میں نے پڑھ لی چلیں اگلا بتائیے کیس PLD 1997 Supreme Court 426 check this case my lord PLD 1997 Supreme Court 426 relevant 519 1997 PLD Supreme 420 جی صفحہ 511 page 511 511 سلیم اختر کی لیں گے جی 511 پہ کہاں کون سا پیراگراف Lord, paragraph 44, the second part of it. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it general or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with this proposition and still dismiss your petition. I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are built-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. اس سے پہلا بات ہے کہ separation of executive is undermined. یہاں تو parliamentary بات ہے نا legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. ایک سیکنڈ دوسرا بتا رہے ہیں PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court PLD 1973 Supreme Court 49. Ziaur Rahman's case 73, 79. 73. My lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my lord. To 70. ٹھیک. And see proposition pay. Please lordship. Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. Paragraph 70 پہ میں ذرا پڑھنا چاہوں گا سر اگر اجازت دے.
Very good. Very. ये आपने कहा यही प्रोपोजिशन है सर, तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज। My Lord, page 70. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. Okay. Yes, enabling provision just with the court. It is an enabling provision. How it is applicable here? My Lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court. Page 161. 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant. Relevant is page 189. जी. Page 247. यही बात है अलग। Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the Constitution. 321, page 331. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, सवालों को भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे। फिर आप एक जजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नहीं, ठीक है, आपने कहा भाई डिपेंडिंग ऑन रूल, हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद आपको कहीं जाना है। My Lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My Lord, today, sir, my submissions will be precise. I've already filed my written brief. I will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's vese bhi right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a... I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप अग्री करते हैं? नहीं, ये आप इनकी भी बातें सुन लीजिए। Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare. We will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. Otherwise, from morning I've not been agreeing with your lordship. तो आप we will let's say we'll come back at 3 o'clock or 10 to 3 कर लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने ओहदे का हलफ उठाने के बाद अपने पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही की। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की। Additional Advocate General, so he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है, तो इनको जरा हम फारिग कर दें, फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। चलो। मनाज़िर आपने देखे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में इस वक्त वक्फा किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने ओहदे का हलफ उठाने के बाद अपने पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही की। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई गई और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मफाद आमा के मुकदमात में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम करने से मुतल्लिक है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक अज खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी कर सकेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कई अहम रिमार्क्स भी दिए। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का पहला दिन था और फुल कोर्ट की ये समाअत जारी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर जो है वो वक्फा किया है। 3 बजे बेंच वापस आएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए और उन्होंने जो है वो वकला को अपने दलाइल टू द पॉइंट और मुख्तसर रखने का भी बार बार कहा। चीफ जस्टिस ने जो है वो ये कहा कि अगर इस एक्ट के जरिए उनके रात को जो है वो तकसीम किया जा रहा है और उसके बाद इस पे शफाफियत आएगी और एहतसाबी अमल जो है चीफ जस्टिस का वो बेहतर होगा, तो उनको इस मामले पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आप चीफ जस्टिस की पावर्स जो है वो बढ़ाई जा रही है और मुझे जो है वो ये इख्तियारात मेरे इख्तियारात बढ़ाए जाए तो मैं इख्तियारात बढ़ाने पर भी वो इख्तियार नहीं लूंगा। बेंच में जजेस की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो सवालात वकला से किए जाते रहे। जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 141 के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जिस पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं है। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि दुनिया भर में जो है वो फुल कोर्ट की इस तरह की जो है वो दुनिया भर में जो बेंचेस की तश्कील है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होता, बल्कि उन्होंने दुनिया की मिसाल देते हुए कहा कि बैरून मुल्क बैलेट के जरिए और जो फुल कोर्ट होती है वो जो है वो बेंचेस की तश्कील का मामला देखती है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदे कानून साजी करें तो इसमें क्या बुराई है, और अगर हम 17 जो है वो गैर मुंतखब लोग यहाँ पर बैठ के रूल्स बनाए तो उस पर आपको कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा कुछ जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक ये सवाल भी किए गए कि जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल किया कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से अदलिया की जो आज़ादी है उसमें मुदाखलत कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदलिया जो है वो आज़ाद है और उसकी जो आज़ादी का हक है वो बुनियादी हकूक में से है जो कि आइन में दर्ज है। उन्होंने कहा कि अदलिया के जो कवानीन हैं अदलिया से मुतालिक वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में दर्ज हैं और जो पार्लियामेंट है वो अदलिया से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी सवाल इस सारे केस के अंदर सिर्फ एक ही है कि अगर रूल्स बनाने भी हैं तो ये रूल्स बनाने का इख्तियार किसका है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा जो है वो मुसलसल वकला को टू द पॉइंट दलाइल देने का कहते रहे, लेकिन बेंच की जानिब से मुतअद्दिद सवालात किए गए। जस्टिस हसन महिला ने ये कहा कि ये जो कानून साजी है इसको अगर वो सादा अल्फाज में बयान करे तो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर है। एक ये कि चीफ जस्टिस की पावर्स को जो कि आईनी इख्तियारात है उनको तकसीम किया गया है और उनको तकसीम करके जो है वो 3 रुकनी जजेस की जो कमेटी है उसके सुपुर्द किया गया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं इस चीफ जस्टिस के इख्तियारात को डिवाइड करने में जो है वो बुनियादी हकूक कहाँ पर मुतासिर हुए ये बता दीजिए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि अपील का हक देने से कौन सा जो है वो आईनी जो बुनियादी हक है वो मुतासिर हुआ, ये उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के जो कानून साजी है वो करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट की कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के
इख्तियारात में मुदाखलत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया। और जस्टिस अतर अल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दो अलग अलग जो है वो चीज़ें, वो सेम चीज़ नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मुदाखलत हुई तो उससे पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में बेहतरी की है, बल्कि और इस तरह की जो कानून साजी है उससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बेहतर बनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनमें जो है वो बेहतरी लाने की ये कानून साजी है। उन्होंने कहा कि जो ये कानून साजी है इसके जरिए ये कहीं भी नहीं कहा गया कि जो अपील सुनने वाले जजेस है वो किसी काबिल नहीं है या उनकी काबिलियत में कोई फर्क है, बल्कि सिर्फ जजेस की तादाद पार्लियामेंट के इस जो कानून साजी है उसमें बताया गया है। इसी तरह के रिमार्क्स, इसके जो मुतज़ाद रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात कही कि क्या अगर कल को पार्लियामेंट ये कानून साजी करते कि फलां केस के अंदर 7 जजेस बैठ के जो है वो इस केस को सुनेंगे तो क्या वो पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होगी। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि जो 5 जजेस के अपील सुनने का मामला जो है वो इस कानून साजी के अंदर शामिल किया गया है, वो जो सेक्शन शामिल किया गया है, अगर ये जो मौजूदा एक्ट है अगर इसका फैसला जो है वो फुल कोर्ट कर रही है तो इस एक्ट के खिलाफ जो नजरसानी में अपील आएगी उसको कौन सुनेगा, ये सवाल उनकी जानिब से किया गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि अगर जो चीफ जस्टिस के अगर इस एक्ट की यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की तौसीक होती है तो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम वाली कमेटी है अगर वो ये फैसला करती है कि इस एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें यानी जो नजरसानी अपील आएगी उसको 5 रुकनी बेंच सुने तो उसको फिर 5 रुकनी बेंच ही सुन सकेगा। अभी जजेस की जानिब से जो है वो ये सवालात होते रहे। इम्तियाज सिद्दीकी जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील है उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस कानून साजी की तौसीक की जाती है तो ये तारीख में अच्छे अल्फाज में जो है वो याद नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन बनाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं और उनको उनमें अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी आइन के तहत सिर्फ अदलिया का ही अपना इख्तियार है। अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीसा ने ब्रेक से पहले अटॉर्नी जनरल को जो है वो दलाइल की हिदायत की है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने व्याना जो है वो जाना है। उन्होंने अदालत को बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो किशन गंगा डैम केस है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए व्याना जाना है, जिसके लिए वो आज ही अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और आज रात बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि वो ब्रेक के बाद यानी 3 बजे आके अपने दलाइल का आगाज करें और उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं उनको ये कहा है कि वो अपने दलाइल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद जो है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आपने तफसीलन इस बारे में हमें आगाह किया। आप जियो न्यूज के साथ रहिए। रेडी रेडी गो। ग्लूको टेडी केक जिसमें है मजेदार क्रीमी मिल्की फिलिंग, अंडे, दूध, गंदम की ग़िज़ायत और इजाफी कैल्शियम भी। रेडी टेडी ग्लूको। बीओपी तकवा बिजनेस अकाउंट जिससे मिले मुफ्त इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक, सीडीआर और बेशुमार दीगर सहूलियात और अकाउंट खुले सिर्फ 1000 रुपए से। बीओपी तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ब्रांड। जियो न्यूज हाफ आवर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय। अभी अपने करीबी रिटेलर या माय टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाओ। एंड पाकिस्तान की पहली 24 कैरेट क्रीम ब्लीच, पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच। अब सिर्फ 200 रुपए में टेलीनॉर 4G मंथली टीम प्ले ऑफर से मिले 15 GB डेटा फॉर फेसबुक एंड व्हाट्सएप। अभी अपने करीबी रिटेलर या माय टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाओ। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर।
पाकिस्तान का नंबर 1 कैजुला मस्टर्ड बीज, जिसने दी किसान को नई उम्मीद। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल, जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 165 रुपए के साशे पैक में। स्मूथ, मॉइस्चराइज्ड, ब्राइट, फेस फ्रेश और स्किन परफेक्ट। फेस फ्रेश फेयरनेस लोशन, जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। आपकी शख्सियत की पहचान, फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। रॉयल के स्टाइलिश डिजाइन हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। पूरे पाकिस्तान ने माना, सालन और तेल के जिद्दी दाग हुए एरियल से साफ। एक दाग बाकी है, कड़क चाय का कड़क दाग। रगड़े बिना इसे निकालना, तो हो जाए मुकाबला। एक तरफ रगड़ा और मशहूर पाउडर, और दूसरी तरफ सिर्फ नए एरियल की कड़क सफाई। नया और पहले से बेहतर एरियल बनाए ज्यादा झाग, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग, सिर्फ एक धुलाई में। तो किसने की कड़क दागों की कड़क सफाई? सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े दाने और उतने ही जायकेदार। सुप्रीम दानेदार, दाने हैं इतने बड़े कि इसे सब मान जाए। अब आ गई है सुप्रीम दानेदार में भी बड़ा दाना, बड़ी जायकेदार। बीक फ्रीन सुपर लाया, सुपर सॉफ्ट बीक्स। सफर में और दफ्तर में सुपर का सॉफ्ट बेक्स मिला है। दूध का ताजा मजा है, नरम मुलायम और मीठा है। सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर सुपर सॉफ्ट बेक्स केक है। सुपर। Geo News updates are brought to you by The best and most nutritious chicken, हर बार Sabroso. When it's love, it's fact. सुप्रीम कोर्ट में जारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में मुख्तसर वक्फा। 3 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। और लाहौर के मकामी होटल में मुस्लिम लीग नून पंजाब का मुशावरती इजलास। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, नायब सदर हमजा शहबाज पहुंच गए। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So